Degree of total leverage. Module 227, Financial Management. Before this discussion, we have talked about the two leverages, that is, operating and financial leverage. And we also discussed that how do we calculate that how much financial or operating leverage is there in a business organization. And we said that we calculate the degree of operating or financial leverage, which actually determines the level of operating and financial leverage. Operating leverage is one way of creating leverage, and financial leverage is the other way. But obviously, in one business organization, we do have operating cost, which is fixed operating cost, and we also have fixed financial cost. So this means that there must be a combined effect of the two leverages, and that is what is called the total leverage. Now, if we remember that the operating leverage was actually the link between sales and EBIT. So it was the percentage change in EBIT with a given percentage change in sales. और financial leverage EBIT को relate करता था earning per share के साथ, that is percentage change in EPS with percentage change in EBIT. तो अगर हम इसको यूं combinedly देखें कि sales से EBIT और फिर EBIT से EPS असल में दो components हैं. Sales to EBIT is actually operating leverage, and EBIT to earning per share is actually the financial leverage. So when we combine the two, that is operating and financial leverage, what we get is the total leverage. Now, how do we combine the two? इन दोनों को हमें कैसे combine करना है? The two ways of combining is that either we can add or we can multiply. यानी हम इनकी product भी ले सकते हैं और हम इनका sum भी ले सकते हैं. The answer is that we take the product of two. Product का मतलब क्या है कि हम DFL और DOL को multiply करते हैं in order to get the total leverage. Now let's have a look at it. That total leverage is the combined effect of financial and operating leverage, and it is calculated by multiplying the two values of leverages. यानी अगर मेरे पास for example DOL की वैल्यू 2 हो और DFL की वैल्यू 3 हो, तो मेरा total leverage होगा 2 multiplied by 3, that is equal to 6. Now, how would I interpret this total leverage? मैंने जैसे अभी कहा कि असल में ये दोनों leverage sales से शुरू होकर EBIT से होते हुए EPS तक जाते हैं. तो total leverage में हम directly sales का impact earning per share पर देखते हैं. Let's have a look at the formula of degree of total leverage. And again, the theoretical part of the formula is that what is the percentage change in EPS with a certain percentage change in sales. अगर sales 1% बढ़ती है या कम होती है, तो हमारी earning per share कितने % बढ़ती या कम होती है. This is what is degree of total leverage, the impact of fluctuation in sales on the earning per share. And this can also be calculated by simply multiplying DOL with DFL. यानी अगर हमने DOL और DFL की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रखी है, तो हमें मज़ीद कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास total leverage आ जाएगा. So in this case, you can see that if DOL is 2.6 and DFL is 3.75, the product of two is 9.75. Now DTL equal to 9.75 means what? It means that with 1% change in sales, your earning per share will change by 9.75%.
यानी इतना ज़्यादा फ़र्क होगा हमारी EPS के अंदर सेल्स के थोड़े से तब्दील होने से. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर. और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी उस फर्म या उस बिजनेस का टोटल लेवरेज उतना ही ज़्यादा होगा. द सेम थिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ DTL. ये फॉर्मूला असल में कुछ नहीं है, लेकिन ये DOL और DFL के दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन कर दिया गया है. सो वी हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला that DTL in rupees is equal to EBIT plus fixed cost divided by EBIT minus interest minus preferred dividend, and this preferred dividend is divided by 1 minus tax rate. So once we apply this formula, you can see that with the given values of EBIT and fixed cost, which is 500,000, 800,000, and 200,000 interest and 100,000 preferred dividend with 40% tax, we get the same value of DTL, that is 9.75. तो इस बात को यहाँ पर हम मॉड्यूल को ख़त्म करते हैं कि DTL हमारे फर्म या बिजनेस के अंदर जो टोटल लेवरेज का इफेक्ट है उसको बताता है, और ये कंबाइंड इफेक्ट है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का. लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है DFL और DOL का, ये सम की शक्ल में नहीं है, यानी दोनों लेवरेजेस को ऐड करने से DTL नहीं आता, बल्कि DTL इज द प्रोडक्ट ऑफ DFL एंड DOL.